श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् महागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजता गन्तु यज्ञम् हवन् देवी जुजुषाणा घृताचीषग्मान्नो वाचमुशती शृणोतु वाग्देव्यै नमः। ॐ भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को जय श्री राम। आज हमारे साथ एक खास स्पेशल गेस्ट हैं अजय जी, जिन्होंने अहम ब्रह्मास्मि जिनका चैनल है, और मैंने उनको आज इनवाइट किया है कि वो हमें कुछ बताएं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देंगे कि ये जो एब्राहमिक रिलीजन्स हैं, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये सब जो है इजिप्शियन सिविलाइजेशन से जो है वो निकले हैं। तो मैं इतना बता दूं कि हो सकता है कि वो कुछ बातें अपनी ये स्ट्रीम शायद इंग्लिश में होगी, तो मैं आप लोगों के लिए ट्रांसलेशन कर दूंगी। वो बैक में आ चुके हैं, तो मैं ज्यादा वेट ना करते हुए उनको बुलाती हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम, वेलकम टू आवर चैनल। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद मैडम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। इसी अवकाश देने के लिए मैं सभी को धन्यवाद बोलता हूँ। आई नो हिंदी नॉट मच। It's okay. I told them that I'm going to translate everything that you speak in Hindi. Okay. Because most I of will my also try audience to knows Hindi. Okay, I will try to use some of the Hindi words because It's okay. You I can know. use Okay. in English. Okay. I will translate Okay. everything in Hindi anyways. So whatever you feel comfortable. Okay. Yes. So can you please add my slide PPT? Sure. Okay. To give an introduction, actually I wanted to understand. I was reading, I started my YouTube channel with criticism of Bible, but what happened is the more I went into the criticism and the more I read, I was a little bit confused because the one chapter and the other chapter, there are conflicts. Like in one place they say you should do circumcision. In other place they say you don't need to do. In one place they say you should eat meat. In other place they say you should not. So like this there are many conflicts and there are Okay. many unanswered questions in Bible. Like You pause after every paragraph, so it gives me time to do translation. yeah, sure. तो ये Please कह go रहे ahead. हैं कि इन्होंने अपनी शुरुआत जो थी यूट्यूब चैनल की, वो क्रिश्चियनिटी के क्रिटिसिज्म में स्टार्ट करी,
लेकिन जब ये पढ़ते गए और रिसर्च करते गए तो इन्होंने पाया कि बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस थे, उसमें विरोधाभास था। कहीं पर लिखा था कि खतना करना है, कहीं पर लिखा था नहीं करना है, और कहीं पर लिखा था मीट खाना है, और कहीं पर लिखा था नहीं खाना। Okay, so I wanted to get a very clear picture of the origin of Bible and the origin of Christianity. So when I started reading more and more, so then I went into Judaism. I read in depth about Judaism. Then finally, I one day I found one book. That book name is Jesus. Jesus like people before Jesus. You can अम, translate. तो इन्होंने पहले जो है, जब ये बाइबल पढ़ने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ये जूडिज्म के बारे में रिसर्च करेंगे, तो ये जूडिज्म पे आ गए और उन्होंने उस पर बहुत रिसर्च किया। और तब इनको एक किताब मिली कि जिसका नाम था लाइक जीसस बिफोर जीसस। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक? The sons, yes, the sun sons of God. Actually, Jesus is called son son of God. The book's name, the name of the book was sun, the sons of God. ओके, तो किताब का नाम था कि ईश्वर के बहुत सारे सूरज। So यस। then I read that book. After that, in that book, she claimed that there are many similarities between Judaism, Christianity, and the ancient Egyptian religion. So then what I did is, so I took all the points of similarity that she provided, and I collected all the ancient Egyptian books that are available online, and I read some of the books. Then I read all the, I have observed all the artifacts. Then there is a museum inside Vatican City, that is Egyptian Archives Museum. Usually, Vatican, the Catholics are uh, against all other religions. They destroyed all the temples of other religions. Like if you see Greek religion, Roman religion, all these temples were utterly destroyed. They don't have any museums for Greek religion, for Roman religion, for Judaism, even their own origin, what they claim. But they don't have any museum, but they have a very big museum with 30,000 artifacts which are displayed there. Still 70,000 artifacts are in storeroom. यू So मीन इन I had, इजिप्ट? इज दिस म्यूजियम इन इजिप्ट? it is in Vatican City. Vatican City. Okay, let me translate this much. Yes. If you speak a lot, then I will forget some of the points. Ah, sure, sure. So, I'll give a pass. Yes. सो ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो है वो जूडिज्म की वो जो सन वाली वो किताब थी, वो सूरज, बहुत सारे सूरज, वो वाली पढ़ी। और उसमें जो लेखिका है उसने बहुत सारे पॉइंट्स वहां पे लिखे कि जिससे कि पता चलता है कि जो इजिप्शियन रिलीजन है और जो क्रिश्चियनिटी है और जो जूडिज्म है, इन तीनों में बहुत सारी समानताएं हैं। तो इन्होंने सारे जो हैं उसके पॉइंट्स निकाल लिए और इन्होंने जो है ऑनलाइन जाकर बहुत सारे और जो है रिसर्च करी इजिप्शियन जो है मैनुअल्स पर। और फिर इसके बाद इन्होंने वहां पर जाकर आर्टिफैक्ट्स के बारे में रिसर्च करी। और वहां पर एक वेटिकन सिटी में एक बहुत बड़ा म्यूजियम है, उसमें 30,000 से ऊपर जो है आर्टिफैक्ट्स हैं दिए हुए। तो ये भी ये बता रहे हैं कि क्रिश्चियन रिलीजन में ये लोग पहले दूसरे लोगों की मूर्तियां जाकर तोड़ते थे। Okay. So then I did lot of research. I collected all the artifact images and whatever the traditions that are followed inside the Roman Catholic Church, the way the Roman Catholic Church is built. I'm hearing an echo. Is it only we both are there? Is it from my side? I can mute myself. Ah, yes, please mute yourself. Ah, okay. So then what happened is, after observing the construction pattern of the church, like we have
Agama Shastra, which tells how a temple is to be built. They don't have any Shastra how a church should be built. But churches are built in a certain way. All churches face east, and all churches have cones like this. There are many things like that, and the Pope and all the Catholic priests, they early morning they come see the sun and tell prayers for Jesus. Like this, there are many traditions which actually point that the original Bible, what they claim is their origin, is not their origin. So it actually originated from some other. You can translate. तो यहाँ पर जो चर्च के ये लोग कोई बड़े शास्त्र नहीं उपलब्ध है इन लोगों के पास, क्रिश्चियंस के पास, जो ये चर्चेस बनाते हैं, पर उनमें एक समानता है कि वो सारे जो है पूर्व की दिशा की तरफ फेसिंग होते हैं और वो सारे एक कोन की तरह जो है वो शेप में होते हैं। और ये लोग जो है वो व्हाट एल्स डिड यू से आफ्टर दिस दैट दे आर ऑल शेप्ड Yes. इन कोन स्ट्रक्चर एंड Then the pastors and Catholic priests वो सूर्य के दिशे में खड़ा के वो प्रेयर करते हैं। हाँ, सो दे फेस, वो जो है ईस्ट की तरफ फेस करके है वो अपनी प्रार्थना करते हैं। सूर्य को देखते हैं और वो प्रेयर करते हैं। वो जीसस का नाम लेते हैं। सूर्य जी, के सूर्य देश देखते हैं। So then I जी। did a lot of research. After that, I made some 3 to 4 videos with all solid evidences that Christianity is in fact, it is Egyptian religion itself. It is not derived from Egyptian religion. Christianity is in fact Egyptian religion itself. I collected all the evidence. I made 3 to 4 videos. Each video was around 1 hour. I have तो all those PPTs. इन्होंने PPT. एक घंटे के कई सारे वीडियो बनाए और इन्होंने ये पाया कि क्रिश्चियनिटी रिलीजन जो है, ईसाई धर्म, वो एक अलग धर्म नहीं है, बल्कि वही एक इजिप्शियन धर्म ही, इजिप्शियन मजहब ही ईसाई मजहब है। सो आई हैव अ क्वेश्चन हियर, लाइक हु डू Yes. इजिप्शियंस वर्शिप? Egyptians have many gods like Hinduism, but their main god is Osiris. So is he Osiris, Jesus? Like you said that Christianity was in fact Egyptian, so their God is different than the Christian God. yes. Jesus, Osiris, both are one and same. अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि इजिप्शियन जो थे वो बहुत सारे भगवानों की पूजा करते थे, लेकिन उनका मेन भगवान था एसाइरस, और एसाइरस और जीसस एक ही हैं। Yes. So after I got complete information, I got to a point conclusion that Egyptian religion is Christianity itself. So then I started researching whether Islam has any connectivity with Egyptian religion. So there I yes. इन्होंने देखा कि जो है वो क्रिश्चियन जो मजहब था, ईसाई मजहब, वो बिल्कुल इजिप्शियन मजहब ही था। जो ईसाई मजहब इन्होंने बना लिया, पर वो था इजिप्शियन ही। फिर इन्होंने सोचा कि क्या इन्होंने ये कंक्लूड कर लिया कि भाई हाँ, वाकई में जो है ईसाई मजहब जो बिल्कुल एग्जैक्टली इजिप्शियन मजहब ही था। अब इनके मन में विचार आया कि क्या इस्लाम भी इजिप्शियन धर्म था कि नहीं? Yes. Then I started researching and I made this documentary. So without wasting any time, I will get into the yes. फिर इन्होंने जो रिसर्च करी वो उससे पावर पॉइंट में दिया है और अब ये इसके बारे में बताएंगे। Yes. If you see Islam, there are two main trademarks. One is head cover, like this hat. There's some differences, but it is same. Covering head and growing beard and removing mustache. तो इजिप्शियन मजहब yes. में और इनके जो ये इस्लाम है, इन दोनों में जो सिर के ऊपर पहनते हैं वो भी सेम है, और जो दाढ़ी रखते हैं वो भी सेम है, और मूछें नहीं रखना ये भी सेम है।
You can These press the slideshow on the top. That way the picture will be bigger. picture will be bigger. The slideshow, just press on slideshow. Can you see The big word, picture now? no, the word slideshow will be written. Just press on that. Yes. Okay, slideshow. Presentation or whatever. No, if Usually I there is a present, shortcut. no, I know, but the thing is, it comes to full screen, Yes, it will but come I in this cannot much area only. It will come in this much area only. this much area. No, 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 here not this, not this. There is a this shortcut on the this top one, which right? says Start Slideshow. Is it visible now in full screen? No, no, I'm not saying to zoom it. 1 second. I'll tell you. Start slideshow from beginning, from current slide, custom Yeah, slideshow, from current slide. Just say setup current slide. slideshow. No, 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 current slide. Just say Ah, current slide. Start current slide. slideshow from current slide. Yes. Start slideshow from current slide. Start Oh, slide. okay. 1 second. Start slide. Yes. Now. No, wait a second. Like, Okay. like Is it I'll show you one thing. Like if you go on okay? any screen, I'll show you something that, Okay. so just like I have this screen. You see, there is a Hmm. thing called slideshow over here. It is written just slideshow. Oh, no, no, no. Just, Actually, I am using PowerPoint. You are using Google Docs. oh, so in PowerPoint, then go into this thing called slideshow. There must be something called, 1 second, view. Go into view and go into slideshow. You non. Oh, okay, okay. Outline Yeah, view, and reading. then Ah, yes, yes. yeah, Reading view. yeah, Yes, 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 yes. Thank you. Actually, I did not know this earlier. yeah, Okay. yeah. Yes. Now, if you see, only I found similarity between ancient Egyptians and Islamic attire, Islamic outfit. If you see, ancient Egyptians always used head cover like this. The Middle East Arabic people use the same, exactly same kind of head cover. तो And देखो, ये इजिप्शियन लोगों ने जो ये है सिर पर कर रखा है, बिल्कुल इसी तरह का जो है वो अरबी लोगों ने भी किया है. yes, if you see, the second thing is they remove mustache. These people also remove mustache. मूछें They इनके भी नहीं है, उनके भी नहीं hmm, है. they grow beard. Here also these people grow beard. दाढ़ी ये भी बढ़ाते हैं, दाढ़ी ये भी बढ़ाते हैं. Yes, if you see all the ancient Egyptians, even now they follow same custom. They wear a cloth on the head, grow beard, remove mustache, and you can observe thousands of years old paintings inside pyramids depicting the people in the same manner. और हजारों साल पुराने जो पिरामिड हैं उनके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो इसी तरह की पेंटिंग्स बनी हुई हैं जिसमें कि दाढ़ी है और सिर ढका हुआ है और मूछें नहीं है. Yes. So, just this evidence is alone enough to conclude that Islam is Egyptian religion. ये एविडेंस ही इतना महत्वपूर्ण है जो ये अपने आप में ही कंक्लूड कर देता है कि भाई देखो कि इजिप्शियंस और ये अरबी लोग जो हैं वो बिल्कुल सेम ही हैं. Yes, here also you can see this is Egyptian god Osiris, Amun Ra. हामुन रा जो है एसाइरस है जो कि इजिप्शियन गॉड है और इसका भी देखो एक कवर है सिर पर और एक दाढ़ी के लिए ये दिया हुआ है. तो बिल्कुल इसका और इसका बिल्कुल सेम लग रहा है कि नहीं. ये इजिप्शियन गॉड इसाइरस है जो कि जीसस था.
Yes, if you see the very ancient Arabic people, like some 1,000 years ago, all are black. They are not white people like we see now. White people came later. तो ये जो इजिप्ट के बहुत साल पुराने, हजारों साल पुराने लोग हैं, ये सब इनका रंग जो है वो गहरा होता था। ये कोई सफेद चमड़ी के नहीं होते थे, बल्कि ये गहरे रंग के, काले रंग के होते थे, श्याम वर्ण के। Yes. The second ground shaking evidence is in Egyptian tombs, they found the process of namaz very clearly depicted in paintings and in statues 3000 years ago. 3000 साल वर्ष पूर्व जो है, नमाज के बारे में जो प्रक्रिया नमाज की होती है, वो उसके बारे में पूरा डिस्क्राइब्ड है। 3000 साल पहले जो इजिप्शियन टूम्स हैं, उसके अंदर जो पेंटिंग्स वगैरह बने हुए हैं, उनके अंदर नमाज के बारे में चित्रण और नमाज की प्रक्रिया पूरी लिखी हुई है। See, you can clearly see this is one of the very important initial step of namaz. It is very clearly written and depicted inside pyramid tombs. Very clear. It's a 3000 years old painting. It is how it is clearly matching. ये 3000 साल वर्ष पुरानी पेंटिंग है, और इसमें आप देखोगे कि जो आजकल ये बोलते हैं अल्लाह अकबर कह के, ये जो नमाज का पहला प्रथम चरण है, बिल्कुल ये जो तस्वीरें 3000 साल पुरानी है, इनमें भी ये कान में ऐसे करके और बिल्कुल नमाज के जो पहला पहला स्टेप है वो कर रहे हैं। Yes, I don't remember the name of this step, but it is very clearly show whatever they are doing in namaz. You can observe exactly same picture, and even the prayer is matching what is written in Egyptian language. तो इनके जो हाथ से ये लोग जो हाथ के जेस्चर्स करते हैं, हाथों से जैसे करते हैं बिल्कुल नमाज का, बिल्कुल वही 3000 वर्ष पहले इजिप्शियन उसमें दिया हुआ है कि बिल्कुल वो ही करते हैं। और जो नमाज के प्रेयर है, जो पूरी प्रार्थना, वो सेम ही है जो इजिप्शियन प्रार्थना है, और जो ये इस मुसलमानों के इस्लाम में है। You can observe this step also exactly. It is matching this step also. ये वाला स्टेप भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो नमाज का स्टेप है, ये रुकू या जो भी ऐसे झुक के करते हैं, ये भी इजिप्शियन जो लेफ्ट की तरफ जो आप पेंटिंग देख रहे हैं उसमें दिया है 3000 साल वर्ष पूर्व, वो भी ऐसे झुक के कर रहे हैं, और आजकल भी ये नमाज ऐसे झुक के कर रहे हैं। आप देखो हेड कवर, दोनों पिक्चर में हेड कवर आप एक बार ऑब्जर्व करो। और ये वाला जो ऊपर हेड कवर है और यहाँ पर जो हेड कवर है, बिल्कुल सेम स्टाइल का है। ये देखिए कि इजिप्शियन स्टाइल ही यहाँ पर है। और आजकल ये जो जालीदार टोपी पहनते हैं, वो सेम है जैसे कि ये इजिप्ट में करते थे। ये है वो जालीदार टोपी। This is sajda. This is another step. ये सजदा Exactly है। same. जो एक और स्टेप है सजदा जो करते हैं, बिल्कुल ये आपने देखा होगा ना। दिस इज वन मोर थिंग, व्हेन दे बेंड डाउन दे गेट a mark on their head. They consider that Yes. person to be very like he's very spiritual or very much religious. They consider the more the darker the mark, so that means that many times he has done sajda. तो ये जो सजदा है, ये आपने देखा होगा, मैंने बहुत पहले कम्युनिटी पोस्ट पे एक डाला था ना कि जो माथे पर एक चित्र वो बन जाता है, गहरा निशान। तो ये समझते हैं कि ये बहुत बड़ा मतलब ये बहुत नमाजी है, मतलब। तो ये सजदा ये कर रहा है यहाँ पर। और देखो ये इजिप्शियन पेंटिंग में कितना पुराना जो है 3000 वर्ष पे पुरानी ये जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, उसमें भी ये नीचे झुक के इसी तरह से सजदा कर रहा है।
Yes, this step we can explain, madam. It is exactly matching. और ये भी देखिए ये कितना एग्जैक्टली मैच कर रहा है कि ये कह रहे हैं कि बिल्कुल कुत्ते की तरह जो है हमें अपने पूरी बाह नहीं नीचे रखनी, केवल हाथ नीचे रखना है कुत्ते की तरह से। और बिल्कुल यहाँ पर भी इसी तरह से जो है वो इजिप्शियन पुरानी पेंटिंग है, इसमें भी ये इसी तरह से कर रहा है। Again, dua step. Please explain, madam. हाँ, ये तशद्दुद की दुआ है और ये भी देखिए कि ये पैर मोड़कर जिस तरह ये बैठते हैं, ये हमारा एक यौगिक आसन है। आपको याद होगा इस तरह पैर मोड़ के खाना जल्दी पचता है। ये हमारा योग में एक योग दर्शन में एक आसन है, भी होता है इसी तरह का। तो ये देखिए ये इसी तरह पैर मोड़कर इस तरह बैठा है दुआ में, और यहाँ पर भी ये जो है मुसलमान इसी तरह अपने दोनों हाथ जो हैं अपने घुटनों पर रखते हैं और इस तरह से बैठते हैं। तो ये जो है वो दुआ में बैठना कहा जाता है। और ये हमारा एक दिस इज वन ऑफ आवर योगा योग आसन्स आल्सो, सिटिंग लाइक दिस Yes, yes, विथ I आवर will show हैंड्स। that also. Yes, I will show that. This is another amazing thing. Women in burqa doing namaz 3000 years ago in Egypt. Women wearing burqa and doing namaz 3000 years ago. The statue. तो ये 3000 वर्ष पुरानी वुमेन है जो कि बुर्का पहने हुए है और ये नमाज कर रही है, और यहाँ पर भी ये नमाज कर रही है। तो ये बिल्कुल सिमिलैरिटी वो वुमेन महिला की भी सिमिलैरिटी दिखाई है यहाँ। Please explain this step also, madam. Raising hands. हाँ, ये भी सजदा का एक और स्टेप है जिसमें कि जब आप नीचे झुक के अपना माथा टिका लेते हैं, इसके बाद ऊपर हाथ करके जो है सजदा करते हैं। तो ये 3000 वर्ष पुराना है स्टेप, जिसमें कि ये अपने हाथ ऊपर करके सजदा का आखिरी स्टेप कर रहा है, और ये भी उसका आखिरी स्टेप कर रहा है। ये भी जो है सजदा का आखिरी स्टेप है। यहाँ पर कितनी सिमिलैरिटी है इसमें और इसमें। इसने भी टोपी पहनी हुई है जालीदार, और इसने भी हेड कवर करा हुआ है। ये भी अपने हाथ ऊपर करे, ये भी अपने हाथ ऊपर करे। यहाँ पर भी Explain देखो this बिल्कुल also. सेम है। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी ये 3000 वर्ष पुरानी महिला है। ये अपने हाथ ऐसे उसी ऐसे पैर मोड़कर वैसे ही बैठी है दुआ में जैसे बैठते हैं, और इसके बाद अपने हाथ जोड़कर जो है वो हाथ ऐसे खुले करके जो है वो अपनी दुआ जैसे ऐसे करके मांगते हैं ना, तो ऐसे करके ये भी अपने हाथ ऐसे खोल के मांग रही है, और ये भी कैसे खोल के मांग रही है। और ये भी बुरके में है, ये भी बुरके में है। Here, Egyptian goddess Mat. Egyptians also have some similarity, like we call Mata Tripura Sundari, Lalita Mata. Like in Egyptian, one of the goddess name is Mat. Mat doing namaz. It was found in one of the tomb. This is not made of stone; it is made of copper. तो ये कॉपर की एक स्टैचू मिली है। ये पत्थर की नहीं है बल्कि कॉपर की बनी हुई है। ये एक वहां पर जैसे हम लोग माता बोलते हैं ना, माता माता ये और माताएं बहुत सारी, तो इस तरह इनकी एक इजिप्शियन गॉडेस थी, मात इसका नाम है। और ये नमाज करती हुई कॉपर की पुरानी आर्कियोलॉजिकल उसमें आपको मिल जाएगी इस तरह की मूर्ति। तो so one thing is there that Allah had 3 daughters, Lat, Uzza and Manat. So this Mat looks similar, name like Lat and Mat. Correct, you are right. Okay. You can just observe the similarity. यहाँ पर भी देखिए सिमिलैरिटी की, ये जो मात की जो मात का स्टैचू है कॉपर का, ये जो नमाज कर रही है और ये जो नमाज कर रही है कितनी सिमिलर है अपने हाथों को। ये ऐसे कर रही है और ये पुरानी है। हाँ, कोई यहाँ नीचे लिख रहा है कॉपी पेस्ट, तो कॉपी पेस्ट तो ये वाली आजकल की तस्वीरें तो अभी से कॉपी पेस्ट ली जाएंगी ना। और पर ये जो है ये हमारा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इन्होंने कलेक्ट किया है कि आजकल की और तब की 3000 वर्ष पुरानी जो है मूर्तियां और जो पाई गई हैं वो कितनी सिमिलर है।
It is not copy paste manner. It is Egyptian religion itself in disguise. I will explain in the end. हाँ, तो ये कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है कि ये इस्लाम है, बल्कि ये इजिप्शियन से ही कॉपी पेस्ट करा है। मे बी दे आर दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, दैट इट इज जस्ट लाइक इस्लाम हैज कॉपी पेस्टेड फ्रॉम दिस इजिप्शियन। तो ये इजिप्शियन ही सिविलाइजेशन है ये एक्चुअली। Here the asanas you mentioned. Here you see this is very ancient statue found in one of the tomb. If you see the attire, the dress code that they follow for Hajj, exactly matching. Dress code and hand posture, everything is matching. तो ये जो हज को जाते हैं तो इसका जो ये पहनते हैं, जो ये चोगा सा पहनते हैं सफेद, ये और ये देखिए, ये जो इजिप्शियन पुरानी 3000 वर्ष पुरानी है, ये कितनी सिमिलर दिखती है। इसका ये सारे पार्ट सिमिलर हैं। इसने भी अपना हाथ ऐसे रखा, इसने भी अपना हाथ ऐसे रखा, एक हाथ नीचे, इसका भी एक हाथ नीचे। इसने जो है वो सफेद सा चोगा पहना, इसने भी पहना है। तो ये बिल्कुल हज की ड्रेस है। Very interesting. You have collected all this evidence. It's marvelous. Thank you, madam. Thank you. ये सारे Now हज you के हैं see यात्री। Isis. No. Here the left side it is Isis goddess. Isis is the wife of Osiris. Oh, Osiris Isis is a wearing goddess. hijab. Yes. We should call ISIS this time this organization ISIS. Yeah. Isis is goddess. ओके, तो ये कह रहे हैं आइसिस अगर बोलते You हो तो can मतलब वहां clearly की see. गॉडेस थी, इजिप्शियन गॉडेस का नाम था आइसिस। और अगर जो ये आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बोलते हो तो उसको आईएसआईएस बोला करो, आइसिस नहीं, क्योंकि आइसिस एक देवी का नाम है जो इजिप्शियन देवी थी। और ये देखिए कि इसका हिजाब जो है बिल्कुल सेम जो इसने डाला है वो बिल्कुल इसका है जैसा हिजाब है। The Kaaba secret. There is it is actually coming from Africa. In Africa, there was a mother goddess. It originates from Africa. The stone, many people believe that it is Sivalinga. Whatever that black stone that is present inside Makkah, it is Sivalinga. Many people believe, and there are many Yes, rumors yes. around it. Yes, Yes, but it P.N. is Oak not has true. written in his book, because actually there is an Yes, inscription found along with that stone which talks about King Vikramaditya, and that's why they believe this is Shivling. And P.N. Oak in his book has written about this, and I have a PPT made on that as well, just this Shivling yes, thing. yes. But even I read that, but the the evidence I found contradicts his claim. Okay, according to you, what is it? According to me, what African people, in some many African people, scholars, they have written books, many books on this topic. What they say is, you can see, it is a moon goddess. Around what they claim is it is the womb of African goddess. How in the womb they are showing the baby. That's what they explained. So why you have got this Allah? What is that? I will That is the explain name that of also. one of the daughters of Allah. Allah was Yes, name of one yes, of the daughters of Allah. yes. Allah, Allah. Now the Allah is none other than sun god. Al El Elohim. All are sun god. This name El Al, all these are coming from Egyptian god. Okay.
So And Muslims say yes. al means like very supreme, like something like that. So if you No, can no, go no. back to the previous slide, I didn't tell them in Hindi what that slide was. Oh, yes, yes, तो ये yes, जो है yes. ना, ये एक एफ्रोडाइट, एक अफ्रीका लोगों की जो है वो गॉडेस होती थी, तो ये वहां से आया है और ये उसकी कोख है। ये अफ्रीकी गॉडेस जो है, इनका ये कोख मानते थे। ये जो काबा में जो पत्थर लगा है, ये अफ्रीका की जो देवी थी उसकी कोख थी। यस, कंटिन्यू प्लीज। This actually I feel disgusting to talk about this, but this was happening inside that Kaaba. People used to go naked around that, and they whoever don't have kids, they used to go around that stone naked, and they believe that if you go around naked and go home, then you will get children. They are roaming around 7 times. This is all the evidence. प्लीज The पुट दैट pagans. बैक स्लाइड ऑन। आई हैव टू एक्सप्लेन दैट इन हिंदी एज Yes, वेल। yes, yes, yes. तो ये क्या होता था कि यहाँ पर प्राचीन समय में था ये, तो वहां पर ये जो कोख थी, जो देवी की कोख मानी जाती थी, ये जो काबा में लोग नंगे होकर चक्कर लगाते थे, क्योंकि मान्यता थी कि अगर आप इसके 7 बार चक्कर लगाओगे तो आपके बच्चे हो जाएंगे। घर इसके बाद चले जाओगे और घर में जाकर सेक्स करोगे तो इसके 7 बार चक्कर लगाने की वजह से आपके बच्चे हो जाएंगे। तो क्यों, योनि के चक्कर लगाने से। तो ये थी बात। Correct, correct. Yes. And here you can see the Asahi al Bukhari. The pagans used to go around Kaaba naked. A tribe from the Yemen Arab used to go around the Kaaba naked. Their human used to go around the Kaaba naked. The man and the woman used to go around Kaaba naked, and their excuse was saying, "We go around it naked as we are born naked. We don't go around it with cloths." तो सही बुखारी में आपको ये सही बुखारी 369 है शायद। तो इसमें आपको मिल जाएगा कि वहां पर जो पेगन्स होते थे, पेगन्स वो होते थे जो मुसलमान नहीं थे, वो नंगे होकर जो है यहाँ पर जाते थे और बिना कपड़ों के, क्योंकि वो कहते थे कि हमारा जब जन्म होता है तब भी तो हमारे में कपड़े नहीं होते हैं, तो इसलिए वो नंगे होकर उसके चक्कर लगाते थे काबा के पत्थर के। Here, light lamp reference. Hubble ball. Ah, yes, madam. Here you have to see Hubble, Islamic pagan practice by Mother Alicia Cotordella. Hubble is one of the ancient god. Hubul, al. This sound is very important. Al, like we say Saraswati Devi, Lakshmi Devi. Like here, Devi is a common word. Similarly, they were using L. Here, this Hubal god symbol is sun, moon, combination symbol. गो बैक, प्लीज गो बैक ऑन दैट स्लाइड, आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी एज वेल। तो यहाँ पर जैसे हम देवी वगैरह लगाते हैं, तो Ah, यहाँ yes, पर yes. अल जो है वो ईश्वर के लिए लगाते थे। तो ये लोग जो सूरज जो सन SUN लिखते थे, वो जो ईश्वर के सूरज हैं, तो उसमें जो है ये हुबल जो था वो इनका मेन मक्का में जो जो पेगन्स थे ना, जो नॉन इस्लामी लोग जो करते थे मूर्ति पूजा, उनमें हुबल जो था वो इनका मेन वो था, इनका मेन ईश्वर था, और वो लिंक्ड था बाल से, जो कि तम्मूज नाम भी था उसका। तो ये बाल और हुबल, अल अल आया है ना, तो ये अल देवी जैसे इस्तेमाल होता है, ऐसे इस्तेमाल होता था। वेलकम अश्लेष जी। Arab. What मैडम actually नमस्ते मैडम। Arab? मैडम नमस्ते मैडम। Ah,
నమస్తే మేడం. అజయ్ గారు నమస్కారం అండి. నమస్తే, నమస్తే. నమస్తే సార్. వెరీ మచ్ వెల్కమ్ టు యూ. వెల్కమ్. Thank you, madam. Just now I came from my office and I am Okay. joining with you, madam. Just now I have seen Ajay's link and I joined. It is my privilege to join with you, madam. Yeah, it's our honor to have you both here. Thank you, madam. Thank you, madam. Please continue. Arab actually means black skinned. Pure Arab people are those who are Negroes. Negroes were called pure Arab people. All these white people are not original Arab people. ओके, तो ये कह रहे हैं अरब का अर्थ होता है ब्लैक, यानी कि काला। तो जितने भी अरबी थे ये सब काले थे, और अभी जो सफेद चमड़ी वाले अरबी दिखते हैं ये ओरिजिनल अरबी हैं ही नहीं। Amun Ra, that Ra Shabd is there in Arab. बिकॉज इसके अंदर अरब में रा शब्द आता है। तो अगर आपको याद होगा, मैं दिल्ली में होती थी तो जामुन वाला निकलता था तो वो बोलता था जामुन काले काले रा, तो रा बोलता था ना, तो रा का अर्थ है ब्लैक, यानी कि काला। तो इसके अरब के अंदर जो रा शब्द है इसका अर्थ हो जाता है ब्लैक, यानी कि काला। Yes, and Ra, Amun Ra, the worshippers of Amun Ra. जो हमुन रा था ना, जो वर्शिपर हमुन रा, तो रा का जब लग जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति काला है। The pure Arab describe their color as black, al-ashwad, and the color of the non-Arab as red, al-humra. तो ये लोग जो है ना अरब का रंग काला बताते हैं, और जो नॉन अरब थे उनका रंग लाल बताते हैं। व्हाट आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर दोस टू? Al-ashwad, al-humra. अल अशवद बोलते हैं जो काले अरबी हैं, और जो नॉन अरबी जो थे उनको अल उमरा बोलते थे, और उनको लाल मानते थे, लाल रंग का। The Arabs pride themselves in their black color. It was written अरबियों in को जो है गर्व होता था अपने काले रंग पर। you can read the reference also, madam. Yeah, reference is Al Arab Tafkhar. I can't see it very well. Bilaw. Bil Sawad al-Lan al-Jahij. Bil Sawad It was Al-Lan. written in it was written in book called al-Jahij. It was ये किताब में लिखा था, अल जहीज नाम की किताब में। Yes. Was Muhammad black or white? क्या मोहम्मद श्वेत रंग के थे या काले थे? A careful examination of history reveals that Prophet Muhammad was of the black race and was black in complexion. Muhammad in the family of the black race. Muhammad himself was, to all accounts, is a Negro. Two historians concluded it, Dr. Ben and A. Rogers. डॉक्टर बेन और ए रॉजर्स ने जो है गहरी रिसर्च करी और अध्ययन किया, तो मोहम्मद जो थे वो एक काले नस्ल के उससे पैदा हुए थे, वो एक नीग्रो थे और काले थे। But I have one question here, that in the book, in the Hadith book, there is one place where one of the Hadith says that when Aisha's, when wind blew or the messenger's robe, she saw his white thigh. I don't understand why that Hadith is given there. I think your research is correct, but I think that Hadith could have been, corrupted or something. Maybe, madam. Because whatever the information that I'm telling you, this is from one of the Negro professor who did lot of research, and he made a video and he wrote a book also. This is from his book. तो ये काफी रिसर्च करी है, और जो ये जिन्होंने रिसर्च करी है उन्होंने ये पक्के एविडेंस पाए हैं कि मोहम्मद जो था वो काला था, और वो काले जो वो होते हैं ना नीग्रो लोग, उनके हबशियों के
उससे था, फैमिली से। Yes, you Another thing can is, see. Ajay, that one thing Yes. is there, Mm, that only people who are very, it's a psychological thing that people who are extremely ugly, mm, they don't want mm, their own images to be taken. And since Muhammad mm, disliked anybody taking his drawing his image, etc., it also mm. proves psychologically that he must have been a very ugly person. Yes, yes, you are right. Here, shield of Saladin. This is one of the very ancient original pictures of shield of Saladin. On Saladin's shield, why a black Negro face is drawn? Who is Saladin? Saladin is one of the direct disciple of like Muhammad, and अच्छा, he fought तो in his army. Hmm. तो सलादीन की शील्ड मिली है जो पुराने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में, और उसमें वो एक डार्क, एक जो है वो बहुत गहरे रंग का आदमी है, और एक काला हबशी है वो, और ये जो है Hmm. मोहम्मद के ही उसका था, वंश का था। Yes. Islam from black to white. Phase 1, pre-Quranic Islam before 1000 BC. Phase 2, Muhammad and Khalifa. Phase 3, the Umayyad dynasty. Phase 4, Abbasid dynasty, Turkish Islam. The current Islam is Turkish Islam. White. Before Turkish Islam, it was all black. Up to phase 3, it was all black. From ओके, phase 4, hmm, तो इस्लाम जो है वो ब्लैक से व्हाइट कैसे हुआ, ये दिया है कि पहला फेज था जो कि प्री कुरानिक इस्लाम था, जो कि 1000 बीसी से 610 ईसी का था, उसमें सारे काले ही थे। और फेज 2 में जो मोहम्मद है और उसके खलीफा थे वो 610 से 661 थे, वो सारे भी काले थे, यानी मोहम्मद और खलीफा भी काले थे उसके। और तीसरा फेज वो आया जो उमैयद डायनेस्टी का था, वो भी 1000 से 100, मेरे को पढ़ने में नहीं आ रहा, वो भी सारे काले थे। तो 3 फेजेस तक, यानी मोहम्मद से पहले, मोहम्मद के दौरान और मोहम्मद के बाद के उमैयद डायनेस्टी, वो सारे काले ही थे। फेज 4 में जो है वो ये अब्बासिड डायनेस्टी आई, उसमें काले और ब्राउन और फिर गोरे भी आने लगे, और इसके बाद ये जो इस्लामी लोग अब जो गोरे वाले दिखते हैं वो सारे टर्की इस्लाम के हैं, जो कि 1055 से 1924 तक आए, वो थे गोरे इस्लामी, जो कि तुर्की इस्लामी थे। the word Allah in Arabic calligraphy, in this word Allah, ilah represents the predicated form in Old Akkadian and Amorite. The word is derived from Proto-Semitite meaning God. Ilah, Allah, Allah, Ilah. That word Ilah is itself the name of another god in Amorite religion, Akkadian and Amorite religion. You can see the statue of the god also. तो क्या है कि अकेडियन और अमोरिक मजहब जो था, उसमें जो उनका देवता था, जो उनका ईश्वर था, उसका नाम इला था। तो ये अल तो हमेशा लगाते ही, जैसे हम देवी शब्द बोलते हैं तो देवी, तो इसी तरह ये अल शब्द लगाते हैं, तो अल लगाने से वो अल इला हो गया, तो अल्लाह उससे बन गया। तो एक्चुअली में ये एक ईश्वर होता था। विच ट्राइब यू सेड? Amorite. एमोराइट ट्राइब का, और एंड सेकंड वन वाज विच? Proto-Semitic. अच्छा, तो Akkadian and Amorite. एमोराइट ट्राइब का ये इला नाम का एक ईश्वर होता था जिसकी वो पूजा करते थे, और वो अल इला से अल्लाह बन गया। Ajay, I have one small doubt. Yes, tell me, sir. These Amorites are means these Amorites also present in the Bible also, the same Amorites, or is a different It is clan?
It is same. Same, no? Okay. Thank Yes, you. yes. Please continue. तो अभी अश्लेषा जी ने ये पूछा कि क्या ईसाइयों में एमोराइट ट्राइब वही ट्राइब है, ये ट्राइब है जो बाइबल में दिए? तो हाँ, इन्होंने ये कंफर्म किया है कि ये वही अमोराइट्स हैं जो बाइबल में भी दिए। These Amorites will worship with Lord Jehovah. अच्छा, तो ये एमोराइट्स जो थे ये यहोवा की भी करते थे? पहले ये यहोवा को पूजा करते थे मैडम, बाद में ये लोग क्या है, धर्म बदल हो गए इसका। ओके। Yes. Muhammad's father name was Abd Allah, means the slave of Allah. तो मोहम्मद के पिता का नाम अब्द अल्लाह था, और अब्द का अर्थ है स्लेव, और अल्लाह तो अरबी में ईश्वर को कहते हैं, तो स्लेव ऑफ अल्लाह मतलब अल्लाह का गुलाम। Madam, you can explain the above. In English it is written the Allah name exists. You can read and explain. I already explained them. No, the second paragraph. I cannot read very clearly. Okay. The name. Shall I read? Yes, please read. The name now Allah. Now I can read. I made my thing bigger. Okay. My screen bigger. जो नाम है अल्लाह का वो दूसरे भी सेमेटिक लैंग्वेजेस में है, जैसे अल्लाह नाम जो है हिब्रू में भी आता है और अरामिक नाम की एक लैंग्वेज में भी आता है, और इसका अरामिक में जो है एलाह बोलते हैं इसको, या फिर एलाहा, और बिब्लिकल जो है बाइबल में भी इस अरामिक लैंग्वेज का दिया हुआ है, और अलाहा कहते हैं सीरियन लैंग्वेज में, जो असीरियन चर्च भी यूज करता है, जिसका अर्थ जस्ट गॉड को अगर बोला जाए इस लैंग्वेज में तो उसको अलाहा कहेंगे, इलाहा। और हिब्रू बाइबल में भी ये जो है प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, मतलब बहुवचन में, और इसको एलोहिम कहते हैं। Yes, continue. Allah had a feminine complement, Allah, and the two are the same as the Allah and Alat of later Arabic orthography, just as the highest God. Detail Nielsen informed us was simply known as. You can explain it in manner why I should read, and you can directly explain. Okay. तो अल तो उसका एक फेमिनाइन, ये तो मेल था, ये तो मतलब पुरुष था, इसका एक स्त्री रूप भी था जिसको अलात कहते थे, और ये दोनों सेम, इसका मतलब सेम है। एक तो अल्लाह जो है वो पुरुष का फॉर्म हो गया, और अलात मतलब जो फेमिनाइन फॉर्म हो गया, और ये अल्लाह बोल सकते हो और अल्लात, और ये जो है वो अरबी उसमें था, जिसको बोलते थे जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ गॉड है, मतलब कि ये सबसे ऊंचा उत्कृष्ट ईश्वर है। और डिटलेफ नील्सन ने जो है लिखा कि ये इसको खाली इल या इल्लाह कहते थे, जिसका आपके मतलब इल और इल्लाह का मतलब होता है ईश्वर। तो उसकी जो वाइफ होगी, यानी जो उसकी भार्या होगी, उसको कहेंगे गॉडेस या देवी, तो फिर उसको इल आह की जगह इल्लात या इलाहत बोल देंगे, तो वो जो है वो रानी होगी उसकी जन्नत की, और सारे जितने भी गॉड्स हैं उनकी मदर होगी। और यूगारिटिक टेक्स्ट में जो कि 1200 बीसी से पहले हैं, उसको TRTYM बोलते थे। व्हाट इज TRTYM? शी हु स्ट्राइड्स, वो जो क्या कहते हैं, स्ट्राइड्स को क्या कहेंगे, जो दौड़ती है या वैसी करती है, ऑन द सी, जो कि समुद्र के ऊपर दौड़ती है, और उसी को हमने शॉर्ट फॉर्म कर दिया अथीरथ, इसलिए वो एक एक्वेटिक यानी समुद्री देवी हो गई, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर या जैसा कि हम उम्मीद करते हैं। और इससे हमें और भी पता चलता है स्वभाव और गुण के बारे में इस ईश्वरीय
इस जो फेमिनाइन है, जो एक स्त्री का ईश्वरीय रूप है, ओल्डनबर्ग के मुताबिक जो नाम अथीरथ है वो भी उस संज्ञा की से रिलेटेड है जिसका मतलब होता है सेंचुरी, यानी कि सेंचुरी कहते हैं एक सुरक्षित जगह को। तो ई लिपिंस्की ने जो है वो कहा कि हिब्रू जो है, जो उगारिटिक टर्म असेरा की जो हिब्रू है, वो है हिब्रू की मदर गॉडेस, जिसका की मतलब होता है, जैसे इसका मतलब सुरक्षित स्थान था, ऐसे ही इसका मतलब होता है एक होली, यानी कि बहुत पवित्र स्थान। तो जो ब्रिटिश हिस्टोरियन है जूलियन बेल्डिक, उसने अपनी रिसर्च करी है, डॉम की रिसर्च, ब्लैक गॉड द एफ्रो एशियाटिक रूट्स ऑफ द जूइश, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम रिलीजन्स, यानी कि इनका एक का काला ईश्वर था जो कि जिसके की रूट्स अफ्रीका से हैं, जो एफ्रो एशियाटिक है, और उसके रूट्स हैं यहूदी, ईसाई और इस्लामी मजहबों में। और बेल्डेक की रिसर्च कहती है कि एक अफ्रीकन लैंग्वेज थी जो कि नॉर्थ अफ्रीका के लोगों की जो इंडिजिनस थी, वहां के नेटिव लोग बोलते थे, और अरेबिया की। इसी तरह एफ्रो एशियाटिक रिलीजियस ट्रेडिशन, इन्हीं ग्रुप्स के अंदर ये लैंग्वेज वहां के लोग बोलते थे, नॉर्थ अफ्रीका और अरेबिया के। और इसकी एक बड़ी बात है कि ये इसके अंदर दो तरह का लॉजिक है। एक तो हमारे जैसे हमारे ईश्वर होते हैं ना, एक मैस्कुलाइन पार्ट होता है, एक फेमिनाइन पार्ट होता है, जैसे हमारे ब्रह्मा के साथ सरस्वती है, विष्णु के साथ लक्ष्मी है, ऐसे इसमें भी मेल फीमेल डायकोटमी है। और इसके अंदर भी डिवाइन ट्रायड है, जैसे हमारे यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश ट्रायड है ना, और जीसस द फादर द सन द होली स्पिरिट, ये भी ट्रायड है। तो यहाँ पर भी ट्रायड था, और इसमें एक ब्लैक रेन गॉड था, एक गॉडेस थी, और एक जवान हीरो गॉड था। तो इसमें साउथ इथोपिया में जो गॉड था उसको वक्का कुरक्का बोलते थे, जिसका की अर्थ होता है काला कुरक्का गॉड। अब आपको कुरक्का से और कुरेश ट्राइब, दिस कुड बी रिलेटेड टू, आई डोंट नो। Yes, you are right. And Quran is also black god. Quran means black god. हाँ, कुरान का अर्थ ही ये बोल रहे हैं कि ब्लैक होता है। कुरान का जो शब्द है वो ही उसका मतलब ही है काला। This is that book. ये किताब है वो काली, ब्लैक गॉड मतलब काला ईश्वर, ये है जूलियन की किताब है ये। I will give conclusion, madam. There are so many slides, lot of information is there. I will give conclusion what I have understood after all this. My conclusion is the Egyptians are most religiously fanatic people. It is evident from their tombs alone. Their life, they did not live for living. They lived to die and go to the afterlife. I'll explain this much. तो ये Yes, कह रहे हैं yes. कि जो इन्होंने अब अपना कंक्लूजन दिया है कि इन्होंने इतनी सारी रिसर्च करी और बहुत सारी इनकी पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं, तो ये आपको अपने पूरे अध्ययन के बाद ये बताएंगे कि ये जो है ये जो इजिप्शियन रिलीजन था वो उस समय के बहुत ही कट्टरवादी होते थे, और ये वहां से पता चलता है उनके टूम्स को देखने से कि ये बहुत कट्टरवादी होते थे, और वो खाली जीने के लिए नहीं, मतलब जीने के लिए नहीं जीवित रहते थे, बल्कि वो मरने के लिए जीवित रहते थे। Yes, their obsession was to enter into afterlife. वो पीछे पड़े थे कि जो है जन्म मृत्यु के बाद क्या होता है, इस बात के पीछे पड़े थे वो। The idea of resurrection, the idea of afterlife, all the stories in Bible and Quran about judgment day, all of them are coming from Egyptian religion without any doubt. In the tombs you can clearly see the judgment day
and after the judgment day, some going to heaven, some going to hell, and are dying after the resurrection. So all these ideas clearly came from Egyptian religion. तो ये जो इजिप्शियन लोग थे, ये मरने के बाद क्या होता है, रिजरेक्शन कैसे होता है, इसके ऊपर इनका सारा कुछ है। और जो बाइबल में जजमेंट डे और जो इस्लाम में जजमेंट डे दिया है, वो एक्चुअली इजिप्शियन में ही पूरा आता है। अगर इनके टूम्स में जाके देखें तो ऐसी ऐसी पेंटिंग्स, तस्वीरें, ऐसे सारे डिपिक्शंस दिए हैं जजमेंट डे के बारे में। Yes, and the story of 72 virgins, when you die for the god, you will get 72 virgins. All these stories are clearly in exact form without any change, are present in ancient Egyptian Book of the Dead. अच्छा, एक पूरा प्राचीन किताब है, बुक ऑफ द डेड जिसको कहते हैं, मरे हुए लोगों की किताब। ये इजिप्शियन किताब है और इसके अंदर 72 हूरों का भी दिया है, डिट्टो वही। बट आई थॉट दैट मोहम्मद मेड दैट अप just to motivate people for jihad. Yes, yes, And yes, you are yes. saying that Actually, this is coming from Egyptian, but Christianity doesn't have the concept of 72 virgins, only Islam has. yes, madam. Actually, that also I will explain. In the Egyptian religion, whatever is there, it's not a single religion. Like in Hinduism, we have Vaishnav, we have Shaivam. Like that, in Egyptian religion, there were different sects. Islam is one sect, Judaism is one sect, Christianity is one sect, Okay. and there were many other sects which vanished, which slowly died off. These people survived. तो मैंने इनसे पूछा कि मतलब जो 72 हूरों का है, ये तो मेरे को लगा था कि मोहम्मद ने जिहाद करके किया है, पर ये कह रहे हैं कि जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी उसमें जो है, जैसे हमारे अंदर शैव, जैसे हिंदुओं में शैव एक सेक्ट है, ऐसे वैष्णव एक सेक्ट है, तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स हैं। तो ऐसे ही इजिप्शियन के अंदर डिफरेंट सेक्ट होते थे, एक सेक्ट इस्लामी था, एक सेक्ट ईसाई था, एक यहूदी था, इस तरह से सेक्ट बने हुए थे। Okay, and coming to Allah, Allah is none other than sun god. Main god in the Egyptian religion is sun, and main god in Judaism is sun god. You can see in the ancient Jew synagogues, there is clearly picture of big sun. Similarly, it is Jesus is also none other than sun god. There are many evidences. Allah is also none other than the sun god. So here, the ancient Egyptians made religious preachers, group of religious preachers, and they sent them all around the world. Even in America, we have Inca civilization who worshipped sun god and who were fanatics like Muslims, and they killed the Native Americans there. They made a big civilization. Like even I found the evidence of Egyptian religion in Australia, India, Okay. China. Let me tell They are this much. everywhere. Let They me are tell they are, this they are much. everywhere. तो ये कह रहे हैं कि जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन में, उसमें सूर्य की पूजा करते थे। तो अगर आप पुराने पुराने जो है यहूदियों के वो देखें सिनेगॉग्स, तो वहां पर बड़ा बड़ा सूर्य बना हुआ है, तो ये लोग सूर्य भगवान को पूजते थे। और जो जीसस है वो भी सूर्य है, और जो अल्लाह है वो भी सूर्य है। सूर्य के बहुत सारे सूर्य भगवान हैं, तो ये सूर्य को भगवान को मानते हैं, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो इजिप्शियन हो। और ये ईसाई के जो जीसस हैं, इनको भी ये सन ऑफ गॉड है, तो उसका इन्होंने स्पेलिंग चेंज कर दिया, SON की जगह SUN होना चाहिए था, सन गॉड थे ये सारे। और इसी तरह जो है इन्होंने कहा कि एक और इन्होंने बहुत अपने दूर दूर तक अपने मजहब को फैलाया। और यहाँ तक कि जो अमेरिका में इनका सिविलाइजेशन है, वहां के लोगों ने, जो वहां के लोकल अमेरिकन थे, उन लोगों को मार के जो है वो अपना मजहब फैलाया। और इन्होंने अपनी रिसर्च करी तो पाया कि ये जो है सिविलाइजेशन के अंश जो है ऑस्ट्रेलिया में भी हैं। Yes, and the Quran, the Muhammad, these stories were very well famous in ancient Egypt. Not only then, even now there are many tribes who worship sun god
and who have the stories about Muhammad, and who have book called Quran. Still there are people living, and many Egyptian scholars, they wrote all those stories down. But those stories are not right stories, right? There are some stories that they say that a woman used to throw garbage on the head of Muhammad, but that story is never found in Quran. There is Maulvis and Muslim Maulanas. They make up that those stories and say. Ah, So yes, are yes, they coming but from there? no, 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 may not be, but there is a book. There is a book called Quran. There is a person called Muhammad, and there is God Allah in one of the ancient Egyptian tribes. Even now, तो ये कह रहे हैं कि जो पुरानी इजिप्शियन कबीला देखो तो उसमें अभी भी वहां पर अल्लाह जो है उसको मानते हैं और कुरान और ये कहानियां वगैरह वहां पर भी चलती हैं. yes, and as we saw, the namaz process described in ancient Egyptian tombs, they clearly worshipped sun god there. Even now, if you see the namaz timings, earlier they used to exactly coincide with sunrise and sunset. So some people criticized that you are worshipping sun, but as per their philosophy, they should not worship sun. So what they did is later they changed, they noted down the sunrise and sunset timings, and they added 15 to 20 minutes to that sunrise and sunset time, so that the sunrise and sunset doesn't coincide with namaz timings. तो You can इन्होंने read this कहा story. कि जो प्राचीन इजिप्ट में जब नमाज ये करते थे तो उसी समय करते थे जब सन जो है सूरज निकलता था और सूरज डूब जाता था. तो लोग बाद में कहने लग गए कि भाई आप तो को जो है वो अल्लाह को मानना चाहिए और अल्लाह हालांकि सूर्य भगवान था लेकिन इन्होंने जो है उसको कहा कि नहीं नहीं सूर्य तो फिर तुम सूर्य को मानने लगोगे ये तो अलग हो जाएगा. तो फिर इन्होंने क्या किया टाइम चेंज कर दिया 20 मिनट और जो है वो उसके सूरज निकलने के उसके बाद डूबने के बाद. Yes, after seeing all this evidence, what I concluded is Egyptians sent their missionaries all around the world. Similarly, they sent some missionaries to the Middle East, and in the Middle East, they firmly established their religion. And in later time, it slowly spread, and maybe some minor changes were done, but there is nothing new under the sun. That's what I believe, because in one illiterate person cannot make up all these stories, and a religion like this cannot be built overnight. And another great evidence that I found is before Muhammad itself, we have an ancient copy of Quranic manuscript. How Quran can be found before Muhammad, how Allah can be there before Muhammad. Hmm. I Because have that I read evidence. myself that Allah was the name for Hmm. God in Arabic. So even Hmm. Christians or Muslims, they were all saying Allah because Allah meant God in Arabic. So even before Muhammad was born. But But Allah what had about three Quranic? daughters whom they Hmm. were worshipping. Yes, but what about Quranic manuscript dating before Muhammad? So Oh, based on this, I found that already there was an existing religion, and some people overtook it, and it was already a bad religion like this earlier also. They weaponized it, and they spread it more violently. सो दिस कल्ट वाज ऑलरेडी प्रेजेंट. तो ये कह रहे हैं कि ये जो कल्ट था ये Hmm. कुरान और ये किताब ये सब पहले ही थी मोहम्मद के जिन मतलब पैदा होने से पहले थी पर मोहम्मद ने इसको अपना बना लिया इस कल्ट को. ये पहले भी बुरा था और इसमें भी मार काट लड़ाई वगैरह था जो कि इसने अपना लिया. Yes. डू यू हैव After this, एनी what I एविडेंस ऑफ understood is that कुरान existing before Muhammad was born? Do you have any yes, yes, evidence? I have. Right now, I cannot show you. Maybe in one slide, Okay, I will next time I will bring. I have that evidence. I already okay, made a video also on that in my channel. okay.
So I will, Okay, if you there's give me your channel link in the private chat, I will display it here for everybody just a to minute. subscribe to your channel. Just a minute. I will give. तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि इनका जो है बहुत इन्होंने अध्ययन किया है और बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। कि ये तो इनका ये दावा भी है कि कुरान भी पहले ही लिखा गया था, मोहम्मद से भी पहले। तो उसने जो है कुरान और इस कल्ट को अपना बना लिया, और इस जो है ये पहले भी मारकाट का कल्ट था और इसको मोहम्मद ने लूट लिया। और इनके पास एक एविडेंस है, और ये जो है दूसरे वीडियो भी इन्होंने अपने चैनल पे बनाया है। इनके चैनल का नाम है अहम ब्रह्मास्मि, और इसका लिंक जो है वो मैं आपको दे देती हूँ, तो आप लोग जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इनके चैनल पर जाकर इनको सब्सक्राइब कर लीजिए। इनके बहुत सारे वीडियोस जो हैं तेलुगु में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं। तो आप ये जो है प्लीज, ये चैनल मैंने शो कर दिया है, ये इसको जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। Yes. और Thank इन्होंने you. बहुत रिसर्च किया है, प्लीज इनके एविडेंस को जाकर देखिए। Thank you very much, madam, for giving me this opportunity. If any questions, I will try to answer. Okay, continue. Yeah, I am done. And if there are you're any, done. That was I your am. conclusion. Okay, Yes, okay. that was my conclusion. तो जो है इन्होंने जो है कंक्लूजन दे दिया है कि इनका कंक्लूजन यही है कि इस्लाम जो है वो पहले से ही था, और कुरान भी था पहले ही मोहम्मद के, और मोहम्मद जो थे वो काले थे और नीग्रो थे, और ये अफ्रीका से निकला हुए था और एक नस्ल थी। और इस्लाम ये जो है इजिप्शियन रिलीजन से ही उसका के अंदर ये यहूदी और ये सब डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स हैं, यहूदी, इस्लाम और ये सब, ये एक्चुअली में इजिप्शियन रिलीजन है। और इसमें 72 हुनों का भी सब कुछ दिया है इसके अंदर। इजिप्शियन रिलीजन के वहां पर के टूम्स वगैरह में ये सारे चित्र और ये सब कुछ मौजूद है, जिससे नमाज की प्रक्रिया और जो वेशभूषा, पहनावा, सब कुछ सेम। So somebody that was wants a to very contribute. Somebody wants to contribute. If you are interested, you can. Yes, if you have, अगर आपके पास कोई questions हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। So I'll see if there are any questions anybody has, they can ask you. अगर आपके लिए आपके पास कोई क्वेश्चन है इनके लिए, अहम ब्रह्मास्मि जी के लिए, तो प्लीज पूछ लीजिए। You are telling your opinion, madam, on this. Okay, so I will call అజయ్ గారు, చెప్పండి సార్. సార్ ఇక్కడ కొంచెం ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉంది కరెంటు, నేను లీవ్ చేస్తాను సార్. నేను దీని మీద ఉన్నాను, బ్యాటరీ మీద ఉన్నాను. ఓకే సార్, నో ప్రాబ్లం. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఐ హావ్ సమ్ ఎలక్ట్రికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద స్ట్రీట్. మేబీ ఐ కెన్ లీవ్. ఇట్ ఈస్ ఆన్ మై కంప్యూటర్ ఈస్ ఆన్ బ్యాటరీ. one question, one person called Sharif Ladka is asking whether Egypt pyramids are older or Islam is older. Because both are related. Religion is old, pyramids are new. Okay. नमस्कार प्रीति जी। और आप दोनों बंधुओं को नमस्कार। प्रीति जी, आवाज आ रही है मेरी? she's Dikshit ji, she is my moderator. Yes. Okay. पूछिए। नमस्ते मैम। अच्छा प्रीति जी, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे इन्होंने जो बोला है वो डॉन गिब्सन से भी रिलेट करता है, जिसका एक बार हम लोगों ने जिक्र किया था। उन्होंने भी इजिप्ट में जो रिलीजन था उसको ही इस्लाम से लिया हुआ बताया कि इस्लाम ने उसी से लिया है। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जो हाँ मक्का की बात आती है, मक्का और मदीना इस एरिया की बात आती है, यहाँ पर अभी आपने सुना होगा कि वहाँ का जो खुदाई हुई है तो वहाँ पे एक मंदिर और उससे रिलेटेड चीज़ें मिली हैं, तो उसके बारे में आपको कुछ जानकारी है और क्या उस पर आप थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं?
Yes, So, I have all the. oh, you understood the question? Yes, I understood the question. I will answer in English. I understood. I have all the information, madam. You asked about Makkah, right? जी, She Actually, asked about two things. One is that Dan Gibson also said similar things, that Egyptian religion was the mother religion of all these. So yes, whether you have read his book, and the second question was about this Makkah. Dan Gibson book I did not read, but his conclusion is right. And जी, coming to Makkah, मक्का, हाँ जी। I have next set of slides also, but I did not show. In the next set of slides, it is clearly written. There are archaeological evidence that near Makkah they found 5,000 years old sun god temples. There were many temples for sun god in Arabia. Even recently, around 7,000 years old sun god temples were found in Makkah, near Makkah and in Saudi Arabia. So actually, in Middle East, the dominant religion was that of the sun. Even after doing lot of research, what I found is there were two main religions around the world. One is sun god, worship of sun. The second one is worship of woman god, like mata worship, Shakteyam. If you see, entire Europe is Shakteyam. Europe is the name of Europa goddess. Russia is the name of one goddess. Britain is the name of Britannica. Poland, Polanica, and Czechoslovakia is the name of one goddess. चेकोस्लोवाकिया। Czechoslovakia, that is the name of one goddess. Even if you observe the British people, the like mother of Britain, like mother of India, like mother of Britain, Britannica is none other than Durga Mata. She holds a Trishul. So Europe is Shaktayam. And coming to in Middle East and Middle East, Egypt, all these are uh, Sauram, Shaktayam, Saivam. These are all Sauram religions. So what I found is in Mecca we have that Kaaba stone, that is none other than sun god. So to represent sun, they installed a black stone and they started worshipping sun god there. Along with sun god, there were many other gods which Muhammad destroyed later. And the main god sun they left, because that stone is none other than Allah. That is why when they do namaz for that stone. And whatever the before that the new Makkah, the old archaeological traces that they found, it is none other than sun god temple. Thank you. And I have another question. Says, why Muhammad was not able to destroy the Egypt pyramids, but he conveyed all the Egyptian people to not believe in Egyptian God and all converted into Islam? Yes, here what happens is when I don't think he had too Egypt, much of manpower to destroy the Egyptian pyramids, and Egyptian civilization must be strong. So he no just no no believed in one of the cults of. no, they tried to destroy Egyptian pyramids. Actually, one of the Egyptian Islamic king, he tried to destroy Egyptian pyramids. He employed massive labor, and during that time there were no explosives. They tried a lot to destroy a few pyramids, and they found that it is draining their what all their money. So it is waste of money. Nobody is worshipping them, so they stopped destroying it. And
when Europeans invaded, they were very much fond of this Egyptian religion, and they wanted all the artifacts. So they started collecting, and they started preserving. So this is why they failed to destroy Egyptian pyramids. Thank you so much. I don't think we have one question is there. How did the word namaz come? I think it was a must be like two things. Even namaha is a Yes. Sanskrit word for worshipping, Mm. like a Sanskrit word, and it must Yes, have yes, you are Turkish right. origins, I think, for Yes. prostration. मतलब झुकने के लिए जो सजदा करने के लिए शब्द तुर्की शब्द था ये, और इसका संस्कृत ओरिजिन भी है. Yes. Yes, I don't think Whatever now we can read. so. I thank you so much for coming here and giving us this incredible, knowledge. And I think so many people had their what you call eyes open today to this fact. You have given so many good, so much of good information and Thank thoroughly you very much. researched. Yes, yes. We will invite Actually, you again for giving us yeah, more definitely. knowledge. Yes, actually, I did not cover. I only covered some 20 to 20% only. There is a lot more. It is time taking, so I did not cover in this session. I will try to come sometime later and cover the remaining. Okay. So this AVS person wants to say something. What do you have to say? Yeah, okay. So thank you for, can you hear me? Yes, Yes. we can hear you. Oh, perfect. Great. Firstly, thanks to both of you, actually, Priti Nigam and Aham Brahmasmi, for really talking on this topic. What I wanted to say is quite a bit, and I may not be able to summarize in a few minutes at the conclusion of your, stream. But You I'll will give have you. to, because you don't have like a research with which you can show us right away, right? I You do. will just I do. speak. I do. I do. Okay. Okay. Okay, so that's why I said, since I have a lot to share, let me leave some references which you can note down, or I can send via an Okay. email if you want. Specific books written by Westerners very, very clearly in 1800s and in 1700s, which clearly explain the even further root of what you just explained, Aham Brahmasmi, about Egyptian roots, right? Since you said Egyptian culture has actually led to an Islamic culture, I have a one more connect from there, which is how Egyptian culture itself is actually a derivative of Hindu Sanatan culture at some point. And this is not a hypothesis. This is written by at least 10 different historians in 18th century in their own books. All of them actually are Western people. And there is a massive amount of information which is hidden from us for the last so many years. All these books are published and available. I'll give you some references at this point, and you can connect a lot of dots. That's one point that I wanted to explain. Okay, I'll give you those references right away. At least 10 of them. If not, I can give you more. Can you You please can send can it you? by email. You can send it by email. Here is the email for Aham Brahmasmi channel person. So you can note down Yeah, or take a snapshot of this email, and you can contact him for specific knowledge you want in some area, or you want to chat with him or whatever. So sure. that is his Can I make contact another email. point? Can I make another Yes, Make point? please go ahead. Please, yes. please. Okay. So the other point actually is, you should also, probably connect the dots. May not be directly relevant, but it has a collateral advantage, so to say, in researching the fact of what, Madam, S. Murdoch who is the president of Theosophical Society of USA. It's also called by the name, Free Thought Nation, and Truth Be Told, etc., or different branches and names of the organizations from the same Theosophical Society of USA. And these guys, she has written extensive books. She's, by the way, an Indian, I believe, recently, expired due to some cancer. But she has done amazing work in terms of actually researching and Yes, telling yes, us yes. that Actually, sorry to interrupt Lord you. Krishna is what actually Jesus is.
And there are humongous amount of actually information available already. So this is the second point, and actually this connects me to a different hypothesis which I heard, which seems to be strong enough for us to explore in a very long term duration, because these requires a lot of research. Is at some point in India, in Sanatana Dharma, there are two thought processes which were very, very prevalent, so much prevalent that there was a conflict between these two thoughts. One is Shaivism, the other one is actually Vaishnavism. I'm sure you know that much of his history, everybody knows. So in what happened is actually these two so-called, if I can call them religions or castes, I don't know, I think these two are different philosophies, right? These philosophies actually has been very strongly propounded and preached across the nations. So actually, there is a reason to say that the what S.M. Murdoch said in her video, in her books extensively about the Christianity being the roots of Lord Krishna. In fact, if you write Lord Krishna in Britain English, you would never write K. You would write Chrisna. So if you AVS G, you have got knowledge about that, but today's topic is different little bit. So I thank understand. you, I'm not and we'll deviating. have another stream on that. We will have another stream, I'm and not then I will deviating much. invite you, and we can speak on that. Right I'm now, not I will debating, but I'm just just saying that while the Christianity has come from Vaishnavism, the Islam is a root from Shaivism, which went to Egyptian culture. So that's where the connecting the dots with all of them. Those are the 3 points that I wanted to make, and I'll send a separate email to you, Aham Brahmasmi. Maybe Priti madam, can you share your email ID as well? I'll copy you, and maybe you can be. It can be of You interest can to tell me your email ID also. I will right away send you an email. you No, can I send have it in noted the down private chat. You can write your email address in the private chat. Yes. Okay, Yeah. thank you so much, AVSG, and thank you, Aham Brahmasmi ji, for sharing your extensive knowledge and research, which you gave us in 1 hour, all that you have researched for months. So thank you so much for sharing this knowledge, and we will invite you again for giving us another knowledge capsule. Yes. Thank you, madam. Okay, after the stream ends, can I talk to you for 5 minutes? Yeah, sure. Okay. So then I will end the stream here, and we can talk in the back. So Yes. everybody, I'll just put you in the back now. So thank you everybody. आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद. तो जो लोग पीछे बैक में बात करेंगे, अब हम लोग बैठ के, और आप लोगों को मैं ये एक स्ट्रीम लिंक दे देती हूँ कि कोई अगर ज्वाइन करना चाहे बैक में तो कर सकते हैं. और आप सब लोग सुरक्षित रहिए, और हिंदू लोगों को ही जो है वो एम्प्लॉयमेंट दीजिए, हिंदू बेबी सिटर्स रखिए, बॉलीवुड और हलाल को बॉयकॉट करिए, और सुरक्षित रहिए, और सेल्फ डिफेंस सीखिए, और सेल्फ डिफेंस की सारी चीजें जो है अपने घर में एकत्रित करके रखें, अपने ऊपर पर्सन में रखें, और अपने बैग्स में रखें, और अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं, और झुंड में निकलें, अकेले निर्जन स्थान पर ना जाएं. मैं डेली आपको ये बातें बताती हूँ ताकि आप जो हैं, ये जो लोग नए आए हैं वो सुन सकें, और प्लीज सनातन सेतु पे जाकर रजिस्टर कर लें, ताकि आपके घर में जो एसी ठीक करने वाला हो, जो इलेक्ट्रिशियन हो, वो सारे हिंदू आए, और चाहे उनकी सब्जी थोड़ी तेज या महंगी क्यों ना हो, आप उन्हीं से खरीदें. धन्यवाद. जय हिंदू राष्ट्र.